Hello everyone and welcome to another tutorial on Python function. So today we are going to see two different programs on Python function. The first program is to find the maximum of three numbers and the second one is to find the sum of all elements in list. So let's get started with the first question. Okay, let me start with the first question, which is to find the maximum of three numbers, right? So to find the maximum of three numbers, it means that कि एक पाइथन फंक्शन हमें क्रिएट करना है. उस पाइथन फंक्शन का वर्किंग क्या होगा कि कोई भी थ्री नंबर्स you have to give to the function will give you the output of the maximum of that number. वो तीन नंबर्स में से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसका आउटपुट देगा वो फंक्शन. ओके, so let me start with the first question to find the maximum of three number. So basically सबसे पहले तो हमें Python function का ही यूज करने बोला है क्वेश्चन में, right? So let me create a first function def, which is a keyword. With the help of this we are going to create our function. Okay, the name of our function is maximum. हमारे function का नाम है maximum. Then the parenthesis, and under this parenthesis we are going to pass three numbers, three arguments. Three arguments क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि we have to find the maximum of three numbers. यहाँ specified है three numbers में से maximum number चाहिए. If they given to you to find between two numbers, so हम सिर्फ दो arguments pass करते हैं and the end with the colon, right? So यहाँ पे create कर लिया है हमने हमारा function. The name of that function is maximum. Three different arguments pass कर दिए. Now we are going to write the working of this function. इस function का working क्या है कि maximum number find out करना है. So for this we are going to use if else statement. if else statement use करके हम इस program को solve करेंगे. So let me start with if a is greater than b and a is greater than c. फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमें चेक करना है कि a ग्रेटर है b से और a ग्रेटर है c से. So पहले we are going to check a is greater than b or c. If it is true, then they have to print a is maximum, right? हमारा फर्स्ट कंडीशन हमने लिख दिया है. We have defined first condition that if a is greater than b and c, then they have to write that a is maximum. Now we are going to use elif. elif में हम दूसरा कंडीशन देंगे b के लिए. is b is greater than a and b is greater than c. b को हम अब a के साथ चेक करेंगे और c के साथ भी चेक करेंगे. If b is greater than a and greater than c, so they have to print b comma b is maximum. Now we have to give a else part. else part में हम सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करेंगे that print c is maximum, right? So यहाँ पे हमने दो conditions दी थी, एक a के साथ एक b के साथ और जो remaining number जो है वो c. That's why we have directly printed that c is maximum. If this two different condition is false, then they have to go with this else statement. So this is how you can write the working for finding the maximum of three number. a के साथ हम b और c को check करेंगे. If it is greater, then we have to print the message that a is maximum. या फिर next condition elif पार्ट में जाएंगे, वहां पे हम b के साथ कंपेयर करेंगे a और c को. is b is greater than a or c? If b is greater than a and c, so they have to print b is maximum. और last c है तो direct else part. If this both the condition, if condition is false, so they has to go to the else part and they will print the message that c is maximum. So I hope you understand how to write the code for this program to find the maximum of three number. So let me run this. Now we have to call the function. So let me call the function maximum. यहाँ पे हम
तीन आर्ग्यूमेंट्स जो हमने पास किए थे उसकी वैल्यूज हम लिखेंगे, राइट. So it is up to you. You will write any of the value. Okay. So I have write to 54, 90 and 6. Now this function will give me the maximum of this three numbers. So let me run. Okay. So they will give us that 90 B is a maximum, which is the true. So this is how you will write the program. You will write the code for this program to find the maximum number. So let me go with the second question. Okay. So let me go with the second question to find the sum of the all the elements in list. What it means that कोई भी एक list है उसमें जितने भी numbers जितने भी items है उसको plus करके उसका overall sum जो भी होगा वो as a output the function has to be give the output to the user, right. So let me write the code for this question. फर्स्ट यहाँ पे एक लिस्ट हम डिफाइन करेंगे. इट इज अप टू यू जो भी लिस्ट देना है जितने नंबर्स जो भी है. सो आई विल write the different numbers, store a different numbers in a list. So I have taken a 1, 35, 84, then 54, then 2, right. Okay, so only the five items, five numbers, it's stored in this list, and the function of this program is to give the sum of all these elements, ये सारे numbers का addition. As the output, the function has to be given to the user. So let me start with defining the function list. एक बार हमने create कर दी list, अब हम function create करेंगे. The name of the function, let me take a sum all, right. यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट में डायरेक्टली ये लिस्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास करूंगी कि यही लिस्ट का हमें सम चाहिए, राइट. सो इन आर्ग्यूमेंट I am going to write the name of that list which is lst and end with colon, right. अभी यहाँ पे तो if else statement की तो कोई भी used है नहीं. You have to be think about how the working of this code will be. कैसा हो सकता है, क्या होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड पूरा एडिशन पूरा सम चाहिए, राइट. सो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास लूप्स होते हैं. So for this program, for this problem, we are going to make a use of for loop. उससे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ. द नेम ऑफ दैट वेरिएबल इज sm एंड अंडर दैट द वैल्यू इज 0. एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम है sm और उसकी वैल्यू क्या है 0. नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ फॉर लूप. x इज अ पॉइंटर. हम लोग ने फॉर लूप देखा है फॉर लूप की ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे से कि x क्या है, क्या वर्क होता है x का. सो आई एम नॉट गोइंग टू बी रिपीट ऑल दिस थिंग. इफ यू वांट टू चेक विद दैट सो गो एंड चेक with my tutorial for loop, hands on loops, right. So x in lst, our sequence is lst क्योंकि हम जो लिस्ट प्रोवाइड किया उसका नाम lst और फॉर लूप में सीक्वेंस की जगह हम lst लिखेंगे बिकॉज हमारा लिस्ट ही सीक्वेंस है. नाउ sm इक्वल्स टू sm प्लस x, प्रिंट sm. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, I have created one of the variable. The name of that variable is sm and the value of that variable is 0, right. Second line से loop start हो रहा है for loop and the for loop the variable is the pointer is x and they have to do a looping in the list in the sequence which is this. ये loop जो है वो इस पे work करने वाला है, right. ये सेकेंड लाइन says that sm plus x, sm की वैल्यू क्या है 0, राइट. sm की वैल्यू 0 प्लस x. अभी हमारा x हमारा पॉइंटर कहाँ है, फर्स्ट एलिमेंट पे. तो 0 प्लस 1 जो भी वैल्यू आएगी वो. और ये the third line says that print sm. So the value of sm now is 0 plus 1 which is 1. So now the value of sm is 1. So they has to print a sm. तो उसने sm print किया तो वैल्यू क्या हो गई 1. I hope
till here you understand what it is happening, राइट sm इज 0 0 + 1 1 क्यों, क्योंकि जो ये पॉइंटर ये जो x है वो हमारा अभी फर्स्ट एलिमेंट पे, राइट. सो 0 प्लस द वैल्यू ऑफ x इज 1, so that's why 0 + 1 is 1. Okay, now when it goes to the second iteration, जब ये second iteration पे आएगा तो ये जो x है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सेकेंड वैल्यू पे, the which is 35. Okay, it is shifted to the second element which is 35. When the loop comes to the second line, this what this line says, sm plus x. sm की फिलहाल करंट वैल्यू क्या थी, 1 थी, राइट. सो दैट 1 प्लस x, नाउ x कहाँ पर है, 35 पे, तो दैट 1 प्लस 35 is 36. Okay, like that the loop is continuing. This 36 is printed with 84, then the whatever the value is, that value plus 54, then the value and the plus 2, like that the iteration is going till it reaches to the 2. And once they reaches to a 2 and the value is going to be printed, the loop is going to be ended, because there is no more elements present in the sequence, right. So this is how the working of this function is going to be done. So let me run this function. Now we are going to call this function sum all, और हम वही लिस्ट को पास करेंगे जो लिस्ट हमने फंक्शन में ली थी. एज इट इज लिस्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट आप वो लिस्ट को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. So let me run this. Okay, so we get the value of all this element is 176. ये पूरा का sum addition क्या आया है, 176. So this is very simple to get the sum of all the elements in a list. I hope so you also understood the working of this the working of this function, right. sm हमने एक अलग से वेरिएबल लिया था कि ताकि हमारी वैल्यूज जो है वो ऐड होते होते इस वेरिएबल में stored हो. Then we have taken a for loop because we have to move from one element to next element for adding all the elements. That's why we have taken a for loop. यहाँ पे हमने iterations में addition किया है कि मतलब जो भी sm की value है, that previous value and the new value is going to be printed, like that it's going to be happen till it reaches to the last element. And once it's over, then you will call the function and you will pass the value, the whole list which you have passed as an argument, and you will get the output. So that's it for today. The part 3 session we have completed. We have saw two different python functions. दो python functions के code हमने देखे हैं, how to write a code for these two programs.